जय श्रीमन्नारायण। तो हम जीवित पुत्रिका व्रत कथा को आज संस्कृत में सुनाने जा रहे हैं। आप लोग भी श्रवण अवश्य करें। संस्कृत एक देव भाषा है। हिंदी समझने के लिए होता है। संस्कृत में सुनना विशेष लाभदायक माना गया है। तो आइए सुनते हैं। अथ जीवित पुत्रिका व्रत कथा। एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः प्रपच्छुः कृपया सूतं लोकानां हितकाम्यया। भविष्यन्ति कथं सूत बालकाश्चिरजीविनः। दारुणेऽस्मिन् महाकाले समाप्ते तु कलौ युगे। सूत उवाच द्वापरस्य युगास्यान्ते प्रवृत्ते दारुणे कलौ योषितां मन्त्रणां चक्रुः शोकोपहत चेतसः। जीवत्याश्च कथं मातो रग्रे पुत्रो विनश्यति इति निश्चित्य ताः सर्वाः प्रष्टुं जगमुर्द्विजोत्तमं। गौतमं तो सुखासीनं महात्मानं रहः स्थितम् उचुस्ताः पुरतः स्थित्वा। विनायानम्रकन्धराः स्त्रिया ऊचुः प्राप्तेऽस्मिन् दारुणे काले कथं जीवन्ति पुत्रकाः। व्रतेन तपसा वापि निश्चित्य वद हे प्रभो इति तासां वचः श्रुत्वा कथयामास गौतमः। शृण्वन्तो योषितः सर्वाः मायापूर्वं यथा श्रुतं। गौतम उवाच निवृते भारते युद्धे निर्विण्णे पाण्डुनन्दने अथ द्रौणी हतान् पुत्रान् दृष्ट्वा द्रुपदनन्दिनी। पुत्रशोकपरीताङ्गी स्वसखीगणसेविता जगाम सा महाभागा धौम्यं ब्राह्मणसत्तमम्। द्रौपाद्युवाच केनोपायेन विपेन्द्र पुत्राः स्युश्चिरञ्जीविनः कथयस्व यथा तथ्यं प्रसादादिजुसत्तम। धौम्य उवाच आसीत् सतयुगे देवी सत्यवाक् सत्यसाधनः समदर्शी दयाशीलो राजा जमुतवाहनः। स कदाचिन् महाभागे जगाम स्वसुरालयं भार्यया सहितस्तत्र निवासामकरोत् प्रभुः। काचिनिशीथे तदग्रामे पुत्रशोकसमाकुला रुरोद करुणादीना निराशा पुत्रदर्शने। हाहाग्रे मम वृद्धाया युवा पुत्रो विनश्यति। तत्क्रन्दनं नृपः श्रुत्वा विदीर्ण हृदयोऽभवत्। अथ तत्र गतः प्राह कथ्यता मृत्युकारणम्। सा चाह गरुरो राजन् भुङ्क्ते प्रतिदिनं सुतान्। वृद्धाया वचनं श्रुत्वा राजा कारुणिको वदत् तिष्ठ मातः सुखं यत्नं करिष्ये पुत्ररक्षणे। इत्युक्ता स ययौ भक्ष्य स्थानं विगतसाध्वसः। आगत्य गरुरो मांसं बुभुजे नृपदेहजम्। वामाङ्गे भक्षिते मांसे गरुडेनातितेजसा अथासौ दक्षिणं पार्श्वं परिवृत्य ददौ नृपः। तद्दृष्ट्वा गरुडः प्राह देवयोनिसुको भवान् न त्वं वेद मनुष्योऽसि वद जन्म स्वकं कुलम्। अथोवाच स्वयं राजा व्यथया कुलीयेतेन्द्रियः। स्वेच्छाया भुङ्क्ष्व पक्षीन्द्र वृथा ते प्रश्न ईदृशः। तच्छ्रुत्वा गरुरो वाक्यं निवृतश्च स्वयं प्रभुः प्रपक्ष साग्रहं राज्ञो जन्म चापि कुलं तथा। राजोवाच जननी मम शैव्यास्ति पिता मे शालिवाहनः। सूर्यवंशोद्भवश्चाहं राजा जिमुतवाहनः। दृष्ट्वा दयालुतां राज्ञो गरुडः प्राह सत्वरम्। वरं ब्रूहि महाभाग यत्ते मनसि रोचते
राजोवाच ददासि चेद्वरं मह्यं पतगेन्द्र वृणोमि ते ये चात्र भक्षिताः पूर्वं ते जीवन्तो जनाः खलु पुनर्नैव जनाः भक्ष्याः प्रार्थनीयं मम प्रभो चिरं जाता हि जीवन्तो तद्विधेयं त्वया सदा। धौम्य उवाच सानन्दन्तो वरं दत्त्वा पक्षीन्द्रो गरुडः स्वयं सुधार्थं नृपकामोऽसौ विवेश वसुधातले ततोऽमृतं समानीय शुभवर्ष खगेश्वरः मृतकानां शरीरेषु चास्थिराशिषु सर्वतः ततस्ते जीविताः सर्वे भक्षिता ये पुरा नराः गरुडस्य प्रसादेन राज्ञो वै कृपया ततः राज्ञस्य द्विगुणं तत्र शुशुभे वपुरुत्तमं दृष्ट्वा दयालुतां राज्ञो बभाषे गरुडः पुनः अपरं च वरं दास्ये लोकानां हितकाम्यया आश्विने बहुले पक्षे तिथिश्चाद्याष्टमी शुभा सप्तमी रहिता चाद्यो प्रजानां जीवितोऽस्मि त्वम् अतोऽयं वासरो वत्स ब्रह्मभावं गमिष्यति दुर्गाया मूर्तिभेदेन ख्याता त्रैलोक्यपूजिता अमृताहरणे वत्स समृता सा जीवपुत्रिका सतिथौ पूजयिष्यन्ति या स्त्रियो जीवपुत्रिकां त्वं च दर्भमयं कृत्वा श्रद्धाभक्तिसमन्विताः तासां सौभाग्यवृद्धिश्च वंशवृद्धिश्च शाश्वतं भविष्यति महाभाग नात्र कार्या विचारणा उपोष्य चाष्टमीं राजन् सप्तमी रहिता शिवा यस्यामुदयते भानुः पारणं नवमी दिने वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिताष्टमी अन्यथा फलहानिः स्यात् सौभाग्यं नश्यति ध्रुवम् एवं दत्त्वा वरं तस्मै एव हरिपुरं खगः राजापि भार्यया सार्धं स्वपुरं वै जगामसः इति ते कथितं देवी व्रतमेतत् सुदुर्लभं यद्व्रतस्य प्रभावेन पुत्राः स्युश्चिरजीविनः व्रतं कुरुष्व त्वं देवी पूजयस्य गिरीन्द्रजां पूर्वोक्तेन विधानेन ततः फलमवाप्स्यसि मुने स तद्वचनं श्रुत्वा पाञ्चाली जातकौतुका पुराङ्गानां समाहूय चकार व्रतमुत्तमं गौतम उवाच श्रुत्वा व्रतप्रभावं च चिल्लिका चिच्छ्वा सखीं कथयामास तत्सर्वं तया च स्वीकृतं व्रतं वृक्षशाखां समारुह्य व्रतपरा चिल्ली सती तत्कोटरे स्थिता तत्र शिवव्रतपरायणा कुतश्चित् खलु सा चिल्ली कथं श्रुत्वा द्विजोत्तमात् स्वसखीं कथयामास याक्षकोटरसंस्थितां कथामार्धां शिवां त्यक्त्वा क्षुधापीडितविग्रहा निर्जगाम ततः शीघ्रं समसानं सवपूरितं तत्र गत्वा च बुभुजे स्वेच्छाया चामिषं शिवा चिल्हे निरसनं कृत्वा स्थिता प्रातरभूत्तदा गोष्ठं गत्वा तया तत्र पीतं च सुरभिपयः समाधाय कृतं तत्र पारणं नवमी दिने क्रियता चैव कालेन पञ्चत्वञ्च गते उभे कोसलायां धनाढ्यस्य सार्थवाहस्य मन्दिरे संयोगाच्च तयोर्जन्म जातमेकत्र सदमनि ज्येष्ठा तत्र शिवा चाता चिल्ली सा तत्कनीयसी सर्वलक्षणसंयुक्ता सा तु जातिस्मराभवत् अग्रजा काशीराजेन कनिष्ठा तस्य मन्त्रिणा विवाहिता विधानेन ग्राहपत्न्याग्निसन्निधौ पूर्वजन्मविपाकेन राजपत्नी मृगेक्षणा यं यं सुतं प्रसूते सा स याति यमालयं जातिस्मरा मन्त्रिपत्नी पुत्रनाष्टौ महात्मनः सुषुवे वसुमातेव वसुनष्टौ यथा किल तान् दृष्ट्वा भगिनी प्राह राजपत्नी नृपागते ईर्ष्योवाच भो नाथ कुरुष्व वचनं मम
पथायेन गताः पुत्राः मदीयास्तेन योजय। भगिन्यश्चापि वै पुत्रान् मां चेज्जीवितुमिच्छसि। तच्छित्वा तद्वधं राजा बहुधा विदधत्तदा। अद्य तान् जीवयामास मृतान् सा जीवपुत्रिका। एकदा तु वने तेषां शिरश्छेदं विधाय वै वंशनिर्मितपात्रेषु प्रेषयामास तद्गृहम्। बभूवुस्ते च मूर्धानो ज्ञानार्तनादितत्क्षणात्। अज्ञाताश्च गताः सर्वे जीविता तत्सुताः पुनः। तान् लोक्य गता सद्यो विस्मयं नृपवल्लभा। प्रपच्छागत्य भगिनीं किं व्रतं च कृतं त्वया। येन जीवन्ति ते पुत्रा मृताश्चैव पुनः पुनः। मन्त्रिर्भार्योवाच पूर्वजन्मनिजातोऽहं चिह्नित्वं च श्रीगालिका। कुर्वन् त्वया व्रतं सम्यक् पालितं